हेलो स्टूडेंट्स, जय जगन्नाथ। आज क्लास रे आमे डिस्कशन करिबा some of the salient features of Indian Constitution. In previous lecture, we have studied about the making of Constitution, Constituent Assembly. Also, we have covered some of the major committees which were created during the process of writing the Constitution. Okay, आज क्लास में डिस्कशन करिबा some of the characteristics or features of our Indian Constitution. Okay, so there are almost 16 to 17 characteristics are there, so we'll discuss one by one. The first one is lengthiest written constitution. Point number one, it is lengthiest written constitution. There are two types of constitution. One is written, one is unwritten. One is written type, one is unwritten type. The written type, if we'll talk about the written type, okay, so in USA their constitution is written, and in case of Britain their constitution is unwritten. So we need to understand what is the difference between written and unwritten. जेतबे आमे ब्रिटेन कथा कहउछन unwritten, that means their parliament can change everything they want in the constitution. British रो unwritten ता माने British रो parliament पाखरे बहुत power अछि and it can change whatever he wants to change in the constitution. But in case of USA, as it is written, so there is a rigidity and it is not easy to change the things that is being written in the constitution. Okay, so India follows the written type of constitution and it is the lengthiest. Okay, as it is written, it is lengthiest. Why it is lengthiest? So there are majorly 3 or 4 factors, 3 टा 4टा कारण अछि जोथ पे हमरो constituent टा lengthy ହେଇଛି. Okay, the first one is being geographical causes. Okay, geographical causes. Geographical causes माने आम इंडिया रो, okay, it is a very vast landmass. इंडिया रो landmass टा बहुत बड़ो, population हमर एटे बहुत अधिक लोक अछंती. Okay, population भी हमर बहुत अधिक, largest democracy in the world. ठीक अछि, तो आमको एमिति constitution लिखिबार थिला which will be elaborated and detailed. डिटेल थिबो, एलाबोरेट थिबो, सेति पे हमकु तार ज्योग्राफिकल फीचर सहित सब किछि हमकु मेंशन करिया पड़ला. दैट्स व्हाई इट इज लेंथीएस्ट. ओके, देन देयर इज आल्सो हिस्टोरिकल कॉजेस. हिस्टोरिकल कॉजेस से कोन आसीबो? हिस्टोरिकल कॉजेस, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज borrowed many features from different countries. Okay, and the आमे जे देखिबा हम कॉन्स्टिट्यूशन रो जो मेन जोट हमें माने मेजर पार्ट आनी चंदी. ओके, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 and the government of India act 1935 is itself is a bulky. ओके, एटा ही बहुत बड़ा bulky आइटम. अब हम एटरू हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन है आदर हम बहुत किछि पार्ट नहीं चंदी. ओके, दैट्स व्हाई इट इज bulky or it is lengthiest. Okay, then the another factor is that, okay, another factor is that we have a single constitution. Okay, we have a single constitution for both center and state. हमर गोटे constitution अछि for both center and state. State रो जो थे से माने the subject on which they can make laws and the subject on which union can make laws, both are included in the single constitution. That's why these are the 3 major factors for which our constitution is lengthiest. Okay, this is the first salient feature. Second salient feature is that it is drawn from various sources. Okay, it is drawn from various sources.
So we have taken some of the features from Government of India Act itself. We have taken some features from Britain Constitution, some from American Constitution, and so on. Okay, point number 2 is drawn from various sources. Drawn from various sources. In the previous lecture, we have studied that in December 9, 1946, our Constitution Assembly set for the first time. ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମିଟିଂ କରିଥିଲେ December 9, 1946. So at that time, some of the developed nation have already written their constitution. ଯେତେବେଳେ ଆମେ Constitution Assembly ଆମେ ବସିଲା ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ସାରା ବିକଶିତ ଦେଶ ତାଙ୍କ ପାଖରେ Constitution ଥିଲା. Okay, so we have studied what they have written in their constitution. आमे तांको constitution फीचर को आम देखिले कौन कौन से लिखिछन्ती कौन कौन से अनुसार केमिति तांकर इम्प्लीमेंट होउची. Okay, so by looking at their features and by looking at how the features are working and whether it can act in the Indian scenario, India रो जहाँ परिस्थिति थिला से अनुसार काम करियो कि नहीं ताको देखला परे आमे किछि actually किछि नो various features we have added. Okay, so we have taken the provisions mainly from Government of India Act 1935. We have taken some from Britain Constitution. Okay, we have taken some provision from Britain Constitution like single citizenship. आपनको यदि मन थी सिंगल सिटीजनशिप वाज आस्क्ड. ओके, ये जो एसओ एग्जाम होता 27 अगस्त रे ये क्वेश्चन आसाला सिंगल सिटीजनशिप आम कौ कन्स्टिट्यूशन नहीं क्या कौ देश आम ड्र कर. ओके, सिंगल सिटीजनशिप. देन फ्रॉम यूएसए वी हैव टेकन द फंडामेंटल राइट्स. ओके, जुडिशियल रिव्यू. ओके, जुडिशियल रिव्यू. फ्रॉम Canada we have taken, okay, from Canada we have taken strong center. Okay, so these are various features. Although in this lecture only latter part we will cover about all the sources from which we have taken the provisions. Okay, this is number 2, that is drawn from various sources. And point number 3 is our constitution is a blend of, okay, it is a blend of rigidity and flexibility. Rigidity and flexibility. That means there are some provisions which can be amended easily and there are certain provisions which cannot be amended through a simple majority. Okay, there are some provisions which are flexible in nature that can be amended with a simple majority, and there are some provisions which requires 2/3 members present and voting plus 50% plus 1, okay, voting in favor. Okay, in simple majority, that means if our Lok Sabha have 545 members, if we want to pass a bill by simple majority, then you need only 273 vote in favor of you. Okay, but there are certain provisions which require special majority. Special majority means we need 2/3 member present and voting, okay, on the day on which the voting is taken place, and 50% plus 1 voting in favor of the bill. Okay, let's suppose today, okay, today is 3rd September. धरा जो आज गोटे बिल आम पार्लियामेंट रे रखुचंदी. Okay, on the same day there are 400 members present. Okay, so we need to pass the bill in special majority. तो आमको केमती कैलकुलेट करिया पड़ियो. We have to calculate 2 3 into 400 and it must be greater than 273.
and if we are achieving this, then it will be considered at special majority. ओके तो आमर जो पार्लियामेंट प्रोविजन्स अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन अच्छी किसी बिल को आम सिंपल मेजोरिटी आम पास कर पारिबा, किसी बिल को आम स्पेशल मेजोरिटी पास कर पारिबा, एंड देयर आर सम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच कैन नॉट बी अमेंडेड. ओके आपण पार 100% जदि आपनकर मेंबर अछंती, if you are getting 100% of votes, then also you cannot change it. Okay, सेति पई हमर flexible and rigidity both are present in our constitution. Okay, next moving to point number 4, that is federal system with unitary bias. Federal system with unitary bias. It is federal during the normal working, and it is unitary when our country needs special protection to maintain its unity and integrity, sovereignty, and to protect our country. So it is federal system with unitary bias. Okay, federal system with unitary bias. So जेତେବେଳେ normal working अच्छी like now, okay, our government is a federal system. Federal means there are two governments are working. Okay, one is at the union level and one is at the state level. Another one is also there, that is your panchayat raj institution or urban local bodies. Okay, they are having separation of power. तांका पारे अलग अलग लिस्ट अच्छी ऑन व्हिच दे कैन मेक लॉज. ओके, देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर, देयर इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, दीज आर द फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम. फाइन. जितेबाला किसी इमरजेंसी कंडीशन आसीबो, एट दैट टाइम आवर फेडरल सिस्टम विल बी कन्वर्टेड इनटू ए यूनिटरी सिस्टम. ड्यूरिंग दैट टाइम द स्टेट हैव टू ड्रॉ द पावर फ्रॉम द सेंटर ओनली. Center will be all powerful. At that time all the power will be concentrated in the hands of center. Okay, so at the time of emergency, at the time of external war or armed rebellion, at that time our constitution has provided some safeguard measures so that the unity, integrity, sovereignty of our nation can be protected. Fine. So unitary bias can be about unitary bias of features है single citizenship. Whether you live in Rajasthan, whether you live in Bihar, whether you live in Odisha, everybody citizen of India will get a single citizenship, that is they are the citizen of India only. Okay, they will not get any citizenship from the state or in the state in which they are living. Single citizenship. Then there is all India services. All India services like your okay IAS, IPS. Okay, all India services are there. Then governor is appointed by the center. Appointed by the center. Center governor को appoint करे. Governor is the chief executive of any state. यदि ओडिशा रे किसी गोटे बिल गोटे आमर होची, okay, there is act and there is bill. Okay, whenever the draft is presented in the legislative assembly, it is called bill. जेतेबेले से बिलटा पास होबो and it is signed by the, or it will gain the assent of the governor, it will become act. Okay, it is also same for the center. यूनियन ने जेतेबेले हमर लोकसभा कि राज्यसभा गोटे बिल जेतेबेले आपन सुनिते बिल आ तापर एक्ट हुए, बिल प्रेजेंट करा जीवो, जेतेबेले बिल विल बी पास्ड. ओके, वेदर इट विल बी रिक्वायर सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी, जेतेबेले मेजोरिटी सहित सेटा पास होबो, आफ्टर दैट इट विल सेंड टू द प्रेसिडेंट to get the assent, and if the president gives their assent, okay, जेतेबेले president तांका assent दे देबे, then the bill will be converted into act. Okay, so unitary bias हम देखले. Third point is governor is appointed by the center. That means center
इज कीपिंग द इनफॉरमेशन ऑफ द स्टेट जितेबाला स्टेट को लगे जो सेंटर को लगे कि स्टेट रे किसी प्रोब्लेम होची देन सेंटर कैन इंटरवीन ओके सेंटर इंटरवीन करके प्रोटेक्ट कर ओके सो आवर system is our constitution is federal system with unitary bias. Okay, next we will move to point number 5, and the point number 5 is parliamentary form of government. Okay, there are two types of government. One is your presidential and another one is parliamentary form. So presidential form of government is present in USA and parliamentary form of government is present in Britain. Parliamentary form of government, point number 5, parliamentary form of government. Okay, so there are two types. One is your presidential, one is parliamentary. In the presidential form of government, presidential or the president is all powerful and he can employ okay से समस्त जो हेड अच्छी तांको से एम्प्लॉयमेंट देवे प्रेसिडेंट लाइक इन केस ऑफ यूएसए. बट इन ब्रिटेन एंड इंडिया वी आर हैविंग पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ये आम पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छी एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज एबव ऑल. Constitution is above all. Okay, and also we have okay judicial review. Okay, parliament can amend. Okay, parliament can amend major part of the constitution, as well as we have judicial review which can see whether the amendment that is made to the constitution is valid or not. Okay, so we are following parliamentary form of government. Okay, so here in case of presidential form of government, that is in America, there is a separation of power between executives and legislatives, or executives and legislatives. Okay, but in India there is a cooperation and coordination. There is cooperation and coordination between the executives and legislatives. Okay, सेमानकर सेपरेशन ऑफ पावर, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव तांकर सेपरेशन अच्छी पावर रो. ओके, दे हैव डिवाइडेड द पावर. ओके, बट हियर we are cooperating. Okay, cooperation भी अच्छी and coordinate भी अच्छी between the executive and legislature. Okay, and here the parliamentary form of government, that means there is a cabinet. Okay, that cabinet will act as the executive body. Cabinet आमर executive body हिसाब से काम करिवो, and that cabinet is okay, that cabinet is answerable to the Lok Sabha. Okay, Lok Sabha को cabinet or the ministers are answerable to the Lok Sabha. Okay, that is known as the collective responsibility of the executive to the legislature. Okay, then next one is synthesis of parliamentary sovereignty and judicial supremacy. जी आपको कहुच्छे आपड़ी पढ़ी बुक्स गोटे रीडिंग करदे. ओके, योर ऑल कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर्ड. एथरू आम जो आज जो चैप्टर कवर करवा एथरू प्रति वर्ष 2टा क्वेश्चन आछि. ओके, इन एवरी एग्जाम दैट इज कंडक्टेड बाय ओपीएससी. ओके, जदि आप लास्ट 5-6 ईयर देखिए प्रति वर्ष आदि 2टा क्वेश्चन आसी. ओके, सो इट इज इम्पोर्टेंट. तो आम आपको भलरे कवर करवा. ओके, जी दरकार अच्छी से डिस्कसन करवा. ओके, तो आप कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट बुझे आउ थे आप लेक्चर कंप्लीट है गोटे रीडिंग आप बुक्स करेंगे आ मार्किंग करदे बुक्स. ओके,
Next point is synthesis of parliamentary sovereignty. Synthesis of parliamentary sovereignty. Parliamentary sovereignty and judicial supremacy. Judicial supremacy. Okay, what is parliamentary sovereignty? What is judicial supremacy? Whenever our constitution was written, ଯେତେବେଳେ 1946-47 ମସିହାରେ ଆମର constitution ଲେଖା ଯାଉଥିଲା, at that time the constituent assembly felt that कि एमिति टाइम आसीबो, ओके, आफ्टर सम 50 years 100 years एमिति किछि टाइम्स आसीबो, एमिति किछि रूल्स हमको बनाइବାକୁ पड़िबो जोटा हमको एबे प्रेजेंटली देखा जाउनी. ओके, लाइक इन 1946 and 47 देयर इज नो इंटरनेट. सेतबेले इंटरनेट नथिला, इंटरनेटर जरूरत माने इंटरनेट जेहेतु नथिला तापर किछि लॉ बना ही नथिला. बट ड्यूरिंग 2000 ड्यूरिंग 2010-20 now the penetration of internet is very much higher. Okay, एबे बहुत अधिक penetration अछि. So in that scenario we need a proper law to regulate or to facilitate the internet services to the people. Internet is very much essential nowadays. Okay, तो इंटरनेट को आमे फैसिलिटेट करिया पई कि ताको रेगुलराइज करिया पई कि एटा गलत वे रे इस्तेमाल न हो, सेति पई हमको लॉ बनाइବାକୁ पड़िबो. एंड दैट लॉ विल बी मेड बाय द पार्लियामेंट. ओके, जेतरा हमर अछि सेपरेशन ऑफ पावर आमे पढिबा. ओके, देयर इज 3 लिस्ट. वन इज स्टेट लिस्ट जो सब्जेक्ट ऊपर स्टेट लॉ बनइबो. देयर इज ए सेंट्रल लिस्ट ऑन व्हिच द सेंटर कैन मेक द लॉज. देयर इज कनकरेंट लिस्ट जो थे बोथ सेंटर एंड स्टेट कैन मेक द लॉज. बट डू रिमेंबर दैट whenever the center makes law on the same subject on which the state have already made laws, the center law will be prevail. गोटे सेम सब्जेक्ट उपर जोटा कनकरेंट लिस्ट अच्छी धरा जाऊ ता उपरे लेट्स सपोज एजुकेशन. ठीक अच्छे, एजुकेशन रे सेंटर गोटे लॉ बनैला, ओडिशा गोटे लॉ बनैला एजुकेशन उपर ऑन द सेम सब्जेक्ट. व्हेनेवर द सेंटर विल मेक एनी लॉज, ओके, जेतेबेले सेंटर ता उपर किछि लॉ बनैबो, ओडिशा लॉटा विल बी नलिफाइड एंड सेंटर लॉ विल बी प्रिवेल. ओके, तो आम पार्लियामेंट पाखरे सेतिकी पावर थिबा दरकार कि जेतेबेले जहाँ किछि अराइज होबो दैट कैन डील. ओके, जेमिति से ताकू डील करि परथिबे आउ ताकू टैकल करि परथिबे. ओके, फॉर दैट रीजन आवर कॉन्स्टिट्यूशन provides an article that is 368, okay, to amend the constitution whenever it is needed. आमर constitution रे article 368 अच्छी जोटा कहूँ कि आमर constitution को itself it can be amended whenever there is the demand arises. जेतेबेले डिमांड अराइज होबो आम पाखरे प्रोविजन अच्छी कि आमे ताकू चेंज करि परिबा. ओके, दैट इज देयर विजन एट द टाइम व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बीइंग रिटन. 1946 मसीह रे जेतेबेले कॉन्स्टिट्यूशन से लिखिथिले से माने एतिकी विजन लेके लिखिथिले कि आगो को जहाँ भी किसी सिचुएशन आमर अराइज होबो, हाउ दैट सिचुएशन कैन बी डील और हाउ दैट सिचुएशन कैन बी टेकन. ओके, फॉर दैट रीजन दे हैव गिवन सम प्रोविजन. ओके, that is known as your parliamentary sovereignty. Parliament, that means parliament can amend majority of the parts or majority of the provision that is given in the constitution. But do remember one thing, that during the Keswanand Bharati case, okay, one doctrine was given by the Supreme Court गोटे डॉक्ट्राइन देथिले that the parliament cannot amend the basic structure of the constitution. से कहले कि पार्लियामेंट इज सोवरेनिटी. ओके, पार्लियामेंट सोवरेन ता पाखरे एतिकी पावर अछि, बट जेते पावर थिले भी इट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, now you can understand what do we mean by parliament sovereignty. That means majority of the parts that is written in the constitution can be amended whenever the demand arises. जेतेबेले डिमांड होबो, जेतेबेले जरूरत थिबो, we can amend. Now comes to judicial supremacy.
Okay, the Supreme Court and High Court, okay, the Supreme Court and High Court have the power to review the laws that is made by the center or state. Center or state जहाँ किसी law बनइबे ताको Supreme Court और High Court ताको review कर परिबे. Okay, they will review the law, and if they find out that, okay, if they find out that the laws are violating the fundamental rights or the laws are violating the basic structure of the constitution, then the Supreme Court and High Court has the power to nullify the law that is made by the union or the state. Okay, यदि गोटे लॉ बनाई सेंटर द्वारा कि स्टेट द्वारा ताकू रिव्यू कर पावर अच्छी हाईकोर्ट पाखे और सुप्रीम कोर्ट पाखे जिते हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ताकू रिव्यू करेंगे. ओके, लेट सपोज से मैंने जानले कि ये लॉटा फंडामेंटल राइट्स को कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हार्म करुच्ची, देन दे कैन डिक्लेयर दैट लॉ एज नल एंड वॉइड. ताकू नल एंड वॉइड करके से जो लॉटा बनी थी रिपील करेंगे. दैट इज द जुडिशियल सुप्रीमेसी. ओके, वी हैव बोथ parliamentary sovereignty, that means they can amend majority parts of the constitution, as well as we have given, or the constitution have given, supremacy to the judiciary system to review it, and if it is violative of the fundamental rights or it is violative of the basic structure of the constitution, then the Supreme Court or High Court can declare the law as null and void, and it can be repealed by the same authority. Okay, so this is the point number 6, that is synthesis of parliamentary sovereignty and judicial supremacy. Now point number 7, that is integrated and independent judiciary. I think the video will be little lengthier, पाखापाखि गोटे घंटा कि ताठू उपरू जाई पारे. So if you need some rest, just pause the video पॉज कर दिंतु टिके समय अपन रेस्ट नहीं कि देन अगेन यू कैन स्टार्ट. ओके, पॉइंट नंबर 7, इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियरी. दिस इज द डिमांड ऑफ द एग्जाम दैट वी नीड टू स्टडी द जीएस, ओके, इन डिटेल. इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियरी सिस्टम. Judiciary system. Let us understand what is integrated system. That means we have Supreme Court, the highest court of appeal, then we are having High Court, then we are having District Court, and then we are having subordinate courts. Okay, unless otherwise your fundamental right is violated, you cannot move to Supreme Court and High Court. Okay, डायरेक्टली आपन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जाई परिबे नै जे पर्यंत आपनकर फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड. ओके, जदि वायलेट हेनी ताले कोन कोर्ट आपन स्टार्ट करिवे, यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. ओके, सबऑर्डिनेट कोर्ट. सबऑर्डिनेट कोर्ट रू इट विल मूव टू सबऑर्डिनेट कोर्ट विल बी गिवन यू द जजमेंट. इफ यू आर हैप्पी विद द जजमेंट देन इट इज ओके, एंड इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द जजमेंट, यू वांट टू चैलेंज इट, you can go to the district court, then you can go to High Court, and later on to the Supreme Court. Supreme Court is the highest appellate authority of India. Okay, आपण सेठी highest आपण appeal करि परिबे. Fine, and this total system is integrated. आपण देखंतु एटा गोटे integrated system. आपण either below start करिवे, you will go to up and up. ठीक अछि, आपण below start करिके आपण ऊपर जाई परिबे, and the entire system is working as a integrated model. Okay, ये गोटे integrated model हिसाब रे काम करे. All the courts are connected. केमिति connected? Let's suppose your district is Khordha. Khordha रे गोटे case चलछि, and Supreme Court find out that the case that is okay, the case that is being held in District Court of Khordha, it can affect a large masses of the people. तांको अनुभव होला कि जो कोर्ट केस चली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खोर्धा रे सेटा गोटे लार्ज पॉपुलेशन को अफेक्ट कर परिबो. एट दैट टाइम सुप्रीम कोर्ट कैन टेक द केस फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू इटसेल्फ. से ताको कहिबे रिट इश्यू करिवे, आ से जो रिट इश्यू द्वारा दे कैन टेक द केस. ओके, हाउ? बिकॉज इट इज इंटीग्रेटेड सिस्टम. आमर टोटल जुडिशियल सिस्टमटा गोटे ही सिस्टम, तार डिफरेंट लेवल्स अच्छी. नाउ कम्स टू independent system. Okay, how it is independent?
You know that the judges and Chief Justice of India, the judges of High Court, the Chief Justice of High Court, all are elected by the system of collegium system. Okay, they have a collegium system through which the judges are selected. ତାଙ୍କର collegium system ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜଜେସକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି। ତା ଦେହରେ ନା ତ କୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ ଅଛି ନା ତ କୌଣସି ୟୁନିୟନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଟରଭିନ୍। ଓକେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ इंडिपेंडेंट सिस्टम अच्छी जहाद्वारा दे कैन प्रोवाइड द जजमेंट विदाउट एनी बायसनेस। से माने इंडिपेंडेंट अच्छा जहाद्वारा से जहाँ भी जजमेंट आसो दैट विल बी अनबायस्ड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 दैट इज फंडामेंटल राइट्स। ओके, वेरी मच इम्पोर्टेंट। फंडामेंटल राइट आमे आपर आमे पढ़िया प्रिएम्बल, प्रिएम्बल पर आमे पढ़िया फंडामेंटल राइट्स। ओके, this is point number 8, that is fundamental rights. Okay, fundamental rights, it is very much important. Fundamental rights. Okay, it is mentioned in the part 3 of the constitution, part 3 of the constitution. Okay, part 3 अच्छे हमारा it is from 12 to 35, article 12 to 35, it is fundamental rights. We can broadly classify the fundamental rights into 6 sub categories. आमे ताकू 6टा सब कैटेगरी रे आमे ताकू क्लासिफाई कर परिबा। Okay, the number 1 is right to equality. Okay, I am writing it here, right to equality. That is article 14 to 18. Then right to freedom, right to freedom, that is article 19 to 22. Then right against exploitation, right against exploitation, that is article 23 and 24. Then right to freedom of religion, right to freedom of religion. Okay, freedom of religion, it is article 25 to 28, 25 ରୁ 28. Then we have education and cultural rights, education and cultural rights. Okay, that is 29 and 30. And the last one, that is right to constitutional remedy, right to constitutional remedy. Okay, constitutional remedy under article 32. Okay, under article 32 the Supreme Court can issue writ to restore the fundamental rights, and under article 226 the writ can be issued by the High Court. Okay, तो 6टा सब टाइप आम देखले राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 ରୁ 18 आम ये डिटेल आम पढ़ा देखिए आम कौन कौन आम फंडामेंटल राइट्स अच्छी। एंड डू रिमेंबर दैट फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल इन नेचर, it is justiciable in nature. That means if your fundamental right is violated then you can directly go to High Court or Supreme Court. अपन directly Supreme Court किंवा High Court को जाई परिबे whenever your fundamental right is violated. At that time Supreme Court will issue writ under article 32. Okay, Supreme Court writ issue करिवो अपन को fundamental right को restore करिया पई, and High Court can also issue writs under the article 226. Okay, right to equality अपन को जॉब गवर्नमेंट पब्लिक जॉब रे आपन को के डिनाई करि परिबेनी, कोनोसी जगह को जीवा को आपन को के डिनाई करि परिबेनी ऑन द बेसिस ऑफ योर रेस, ऑन द बेसिस ऑफ योर कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ योर जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ योर रिलीजन. दीज आर कमिंग अंडर राइट टू इक्वालिटी. ओके, देन राइट टू फ्रीडम. ओके, आपन को कोन कोन फ्रीडम रो राइट अछि? राइट टू प्रिवेसी, राइट टू स्लीप, राइट टू हैव गुड एनवायरनमेंट. ओके, राइट टू हैव गुड ड्रिंकिंग वाटर. ओके, दीज आर कमिंग अंडर योर राइट टू फ्रीडम. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आपन को पुलिस एक्सप्लॉयट करि परियोनी. Okay, the police system cannot exploit you.
sorry, police system, no, there is some like human trafficking, okay, child labor, okay, human trafficking, child labor, okay, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନରେ ଆସିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜିଅନ୍। ଓକେ, ସୋ I just make a spelling mistake here. This is right to religion. ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ରିଲିଜିଅନ୍ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, you can practice, you can profess, you can propagate, everything you can do, but you have to remember that the practice is not against the moral of the society and it is not disturbing the stability of the society, or it is not creating any problem about the law and order of the system. Law and order को, public morality को यदि किसी hamper करछि, then this right cannot be given to you. Okay, otherwise the right to freedom is given to, or right to freedom of religion is given to every citizen. Then coming to educational cultural rights, okay, it is basically for the minority. Okay, minority जो मैंने अच्छा जो मैंने कल्चरल लैंग्वेज को जो मैंने प्रोटेक्ट करने चाहते गोटे डिस्टिंक्ट कल्चर अच्छी से प्रोटेक्ट करने चाहते, दे वांट टू रन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस, दे कैन डू इट. ओके, एंड इट इज गिवन अंडर एजुकेशनल कल्चरल राइट्स. And in that case, if the government is providing some aid to other educational institutes, it is also mandatory to the government that they will also provide the same assistance to the educational institutes that is being run by the minority peoples. Okay, next comes to right number 6 subcategory, that is right to constitutional remedy. Okay, constitutional remedy माने है कि जदि आपन फंडामेंटल राइट को कौन सी लॉ वायलेट कर, कौन सी अथॉरिटी वायलेट कर, कौन सी गवर्नमेंट वायलेट कर, ओके, यू कैन गो टू डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, and high court will issue writs, okay, under article 226. If you will go to the supreme court will also issue writ under article 32, okay, and your fundamental right will be restored. Okay, this is all about your fundamental rights, although we will in the next coming lectures we will study all these rights in a detailed lecture. Okay, now point number 9, that is directive principles of state policy. Directive principles of state policy. That is known as your DPSP. Okay, fundamental rights we have taken from the American Constitution. Okay, whereas the DPSP was taken from the Irish Constitution or the Ireland Constitution. Okay, so I am writing it in short. DPSP, Directive Principles of State Policy. It is enshrined in the part 4 of the Constitution. Okay, part 4 रे अछि एटा. Okay, it is taken from the Irish Constitution and it is not justiciable. Okay, non justiciable in nature. यदि DPSP पालन होनी, then you cannot go to the court to ask that DPSP must be obeyed. Okay, DPSP ର ମାନେ ହେଲା directive principle of state policy. It is applicable to the government. Okay, जेकोनोसी अथॉरिटी, जेकोनोसी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जेतबेले लॉज बनाउचंती, they have to remember that they have given some directives and they have to obey the directives during making any laws. Okay, जेमती आपनकर जेतबेले हमर लिखा हैले कॉन्स्टिट्यूशन, at that time हमर DPSP को हम फिर तीन भाग रे अछि. गोटे अछि सोशलिस्ट, ओके, गोटे अछि सोशलिस्ट, गोटे अछि गांधीयन, गोटे अछि हमर इंटेलेक्चुअल लिबरल. ओके, तो जमीती गांधीयन ने हमर अछि कि बैनिंग ऑफ काउ स्लॉटर. ओके, काउ स्लॉटर को हमको बंद करने पड़ो. फाइन. देन वी हैव टू मेक लॉज फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज. ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को हमको बनाने पड़ो. फाइन. दीज आर अंडर द गांधीयन प्रिंसिपल. लाइक इन इंटेलेक्ट लिबरल there is uniform civil code under article 44. okay, to protect the monuments. okay, monument को protect करने पड़ो, national importance monument को protection देवा पड़ो. okay, these are coming under your DPSP. and if you will closely observe that there are certain laws are made according to this DPSP. okay,
आप देखिए जोटा आमर आर्टिकल 21A जोटा अच्छी आमर एजुकेशनल राइट्स। ओके, एजुकेशनल राइट्स आगुरी एजुकेशनल राइट्स आम पाखे नथिला, माने एजुकेशनल राइट्स was not provided during the constitution, but they have written it in the DPSP. Now the government is having resources, they have implemented the right to education policy. Right to education policy आसला जो कि 6 ରୁ 14 वर्ष पर्यंत पिला मानकु फ्री रे शिक्षा तांको मिलुछि। Okay, similarly there is uniform civil code, there is Gandhian principle, that is banning of cow slaughter, cooperative societies. Already you know that cooperative societies are given constitutional status. Okay, ये सब गुड़ा जहाँ जहाँ से कन्स्टिट्यूशन लिखाई जहाँ से करें ड्यू टू द अनअवेलेबल ऑफ द रिसोर्सेज, बट दे हैव रिटन इट इन द DPSP सो दैट द गवर्नमेंट और द अथॉरिटी विल कंसीडर दिस थिंग्स व्हेनेवर दे विल मेकिंग एनी लॉज। ओके, एंड इट इज नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, जमीती कि आपंकर DPSP अच्छी इक्वालिटी। ओके, समस्त भितर इक्वालिटी हवा दरकार, बट यू कैन नॉट से दैट कि लेट जड़े रिच मैन अच्छा बहुत पैसा अच्छी मु बहुत गरीब अच्छी मो पार कम पैसा अच्छी, तो आम दिन भितर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हवा दरकार। इट कैन नॉट बी जस्टिसेबल, बट येस द गवर्नमेंट विल एक्ट इन सच ए वे दैट एवरीबॉडी विल हैव इक्वल प्रॉपर्टी। ओके, इक्वल राइट्स मिले दरकार, सब किसी इक्वालिटी हवा दरकार, इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ऑल्सो। ओके, इट इज द directive that says to the policy makers to make the policy in such a way that everybody will get equal wealth, okay, equal status, everything. Okay, so that is your DPSP taken from Irish Constitution Part 4, and it is non-justiciable. And in the judgment of Supreme Court, it is said that our constitution is based on the bedrock of DPSP and fundamental rights. Okay, DPSP and fundamental rights. देखो DPSP होची for the welfare state. The DPSP said that we need to create a welfare state for the masses. आमर गोटे mass में गोटे welfare state आमको create करार अच्छी। Okay, welfare state, that means welfare state माने लोक मानकु सेतिकी सुविधा सुजोग मिलवा दरकार। Okay, it is for a group of people. On the other hand, fundamental right is for a personal. Okay, तो आमर सुप्रीम कोर्ट कहते कि जोटा आमर कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी दैट इज स्टैंड और दैट इज बेस्ड ऑन ए बेडरॉक ऑफ DPSP and fundamental rights. Whenever there is a need to violate the fundamental right of certain peoples to make the DPSP that is going to benefit a large masses of people, then it can be done. गोटे लोकर फंडामेंटल राइट को वायलेट करी जदि बहुत लोकंकर कि ग्रुप ऑफ पीपल कर वेलफेयर हो पार्ची, देन इट इज ओके फाइन। सो DPSP आ फंडामेंटल राइट भितर आमको बैलेंस रखिकी ही लॉज को बनवाक पड़ो। फाइन, नेक्स्ट विल मूव टू पॉइंट नंबर 9। ओके, सॉरी, पॉइंट नंबर 10। DPSP इज ओवर। पॉइंट नंबर 10 इज फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज वाज एक्चुअली जिते आमर लिखाई कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल ड्यूटी बोली किसी नथिला। ओके, इट इज एडेड इन द ईयर 1976 अंडर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 मसीह 42तम संशोधन रे एटा को ऐड करागला अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ सोरेन सिंह कमिटी। फंडामेंटल ड्यूटीज, ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज, ओके, इट इज इन पार्ट IBA ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। IBA रे अच्छी आर्टिकल नंबर 1 इज 51A, पार्ट 4A आर्टिकल 51A by the or on the recommendation of Soren Singh committee, this fundamental duties, okay, was added to the constitution under the 42nd constitutional amendment act, 42nd constitutional amendment act in the year 1976 1976 मसीह 42तम संशोधन रे फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करागला। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज माने हला कि आमे जेमती फंडामेंटल राइट्स अच्छी आमे जेहेतु गोटे देशर नागरिक आमे किसी राइट्स एंजॉय करछंदी, ऑल्सो वी हैव सम सर्टन ड्यूटीज दैट वी शुड डू फॉर आवर नेशन। ओके, तो ये सब जिनस आमर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन नथिला किंतु 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे ये सब हमको ऐड करागला दैट बीइंग ए सिटीजन ऑफ आवर बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया you have certain duties that you need to perform. Okay,
So 42nd constitutional amendment is very much important. It is also known as mini constitution. Okay, it is also known as mini constitution. कहीं mini constitution कहा जाए कारण इतने बहुत important और बहुत सारा amendment करा है, that's why it is known as your mini constitution. Okay, 42तम संशोधन को कहा जाए mini constitution. Okay, you need to remember all these facts. Okay, fundamental duties भी अच्छी आगु का हमें पढ़िबा. Fine. Next we will move to point number 11. That is a secular state. Oh, okay, a secular state. There is two types of secularism. One is positive, one is negative. Okay, a secular state. We'll discuss about this. Okay, one is your positive, one is your negative. Okay, negative रे कौन हुए? Negative secularism रे there is separation between the church and the parliament. Okay, church parliament कथारे मुंडो पुरेबो नहीं कि parliament church कथारे मुंडो पुरेबो नहीं. That is your negative connotation of secular state. But in India it is not applicable. India रे हमारा negative secularism चले नहीं, हमारा positive secularism चले. That means our authorities or our governments, okay, they provide this positive connotation of secular state. That means they will protect, okay, every religion. Okay, they will protect every religion. Fine, just 1 minute. Okay, that means they will protect every religion. ठीक अच्छे, whether it will may be minority, whether it may be majority, whatever the status may be, they will protect every religion. यदि आप देखिए आम आर्टिकल लिखाई 14 लिखाई 15 लिखाई 16 लिखाई कि कौन व्यक्ति को आप जेकोसी धर्म रही था, जेकोसी जगह तार प्लेस ऑफ बर्थ होता हो, जेकोसी कास्ट रही था, जेकोसी सेक्स रही था. ओके, यू कैन नॉट depending upon all these factors you cannot deny a person in case of public employment. Public employment रे आपण एमती करि परिबेनी कि कोनोसी गोटे धर्मर व्यक्ति ताको आपण मना कर देबे कि जेमती हमर आर्टिकल 25 to 28 अछि. आपण जे कोनोसी धर्म रहितांतु यू कैन प्रोफेस और यू कैन प्रैक्टिस, यू कैन प्रोपागेट योर रिलीजन. आपण आपणकर रिलीजियस एक्टिविटी करि परिबे, रिलीजियस जो आपण संस्था बनै परिबे, तार प्रॉपर्टी आपण रखि परिबे, इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी रखि परिबे. बट there is certain restriction. Okay, किसी restriction अच्छी जमती कि आपण एमती किसी करेंगे जो द्वारा आम पब्लिक ऑर्डर रे किसी प्रोब्लेम हो कि मोरालिटी किसी प्रोब्लेम आसो. अदरवाइज एवरी रिलीजन इज सेम फॉर आवर स्टेट, फॉर आवर कंट्री. ओके, स्टेट जो ये कह इन पॉलिटी स्टेट डजंट मीन राज्य. ओके, स्टेट रो मतलब ये राज्य नुहे, स्टेट रो मतलब हूँ बोथ सेंटर स्टेट एज वेल एज एनी अथॉरिटी. ओके, ऑल आर grouped together and known as your state. Okay, that is the positive connotation of secular state. Now we will move to another point, that is universal adult franchise. Universal adult franchise. Okay, universal adult franchise. जेतबले इंडिया स्वाधीन होला, okay, general election was held in the year 1951-52. 1951 रे general election होला, and in that election everybody who is, okay, at that time it is above 21. Okay, एबे जे 18 हो जाई. तो universal adult franchise means that any citizen of India which is not below the age of 18 is eligible to vote, to cast his vote, irrespective of the wealth he held. तापर जिते पैसा अच्छी ता पाखरे सोशल स्टेटस जहाँ भी होता हो, एवरीबॉडी इज एलिजिबल टू कास्ट हिज वोट. ओके, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज समस्त को भोटर अधिकार अच्छी जार बयस 18 रु अधिक. ओके, जितेबाला यहाँ होता से बहुत डेभलप्ड कंट्री कहते कि इट मे नॉट बी सक्सीड. इंडिया ए सक्सेस हो पारनी कारण एत बड़ पॉपुलेशन आंक पाखे अच्छे. हाउ दे विल मैनेज, बट ऑल थैंक्स गोज टू द इलेक्शन कमिशन. कहीं सेबठू एपर्यंत आम बहुत सुंदर तरीके फ्री एंड फेयर इलेक्शन आम एपर्यंत कंडक्ट कर. ओके, प्रीवियसली इट वाज 21 years
to eligible for casting your vote. Now it is 18 years. Okay, and this 3 years was reduced under the Constitutional Amendment Act of 61st. 61तम कन्स्टिट्यूशनल आमेंडमेंट एक्ट रे 21 वर्ष जोटा वोटिंग राइट थिला ताको हमें कमेके 18 वर्ष कर देथिले इन द ईयर 1988. okay, that is your universal adult franchise, right? Next we'll move to point number 13, that is single citizenship. okay, single citizenship माने जेमती आम कथा होते कि आप जेकोसी स्टेट रही था आप गोटे सिटीजन स्टेटस मिले, दैट इज फ्रॉम इंडिया. ओके, सिंगल सिटीजनशिप एटा हमर कोड नहीं, सिंगल सिटीजनशिप वाज टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, इफ यू लुक एट द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका आप जो देखिए अमेरिका रे तांकर कौन अच्छी डुअल सिटीजनशिप अच्छी. डुअल सिटीजनशिप माने ओके, दे आर द सिटीजन ऑफ यूएसए फर्स्ट वन, एंड ऑल्सो दे आर ए सिटीजन ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट. तांकर दुईटा सिटीजनशिप अच्छी, गोटे यूएसए रो गोटे पर्टिकुलर स्टेट रो जो स्टेट रो से बिलोंग करछन्ती. बट इन इंडिया वेदर यू बिलोंग्स टू राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, जेकोसी स्टेट रो आपन को आपन को मिलियो गोटे सिंगल सिटीजनशिप. ओके, एंड दिस इज टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन आम एटा नहीं. ओके, next we'll move to point number 13, independent bodies. okay, independent bodies, there are some independent bodies. okay, किछि independent body अछंती जोटा का हमें constitutional bodies कहउछंती, जोटा कि they are acting independently, unbiased. okay, independent bodies. okay, government have 3 organ. One is legislature, okay, legislative, you can say. Another one is executive and judiciary. okay, legislative is making laws. okay, they are making laws. Then what is executive? They are implementing it. okay, they are implementing it. And the judiciary work is to okay, overlook. okay, they will see how the implementation is going on, or how the laws is made, whether it is made by the due procedure of law or not. okay, everything is judged by the judiciary. okay, तीनटा छाड़ला परे आम पाखरे अछि independent bodies. okay, independent bodies like Union Public Service Commission, okay, like your State Public Service Commission, like Election Commission, like Finance Commission. okay, these are all independent bodies. एमाने जो काम करछंती, ओके, दे आर वर्किंग अनबायस्ड. ओके, तांकर ऊपर गवर्नमेंट किसी प्रेशर न रहू. फॉर दैट रीजन दे हैव प्रोवाइडेड विथ सर्टन इम्यूनिटीज, लाइक दे आर एक्सपेंडिचर. ओके, whether the salary or the pension, the expenditure is charged on consolidated fund of India. okay, consolidated fund of India. ओके, तांकर टेन्यूअर जेतेबेले थिबो, तांकर टेन्यूअर रे किछि आमे माने तांकर फिक्स्ड टेन्यूअर रहइबो, त हमर टेन्यूअर को आमे एते सहज चेंज करि परियोनी. फिक्स्ड टेन्यूअर आउ कोन होई परिबो, रिटायरमेंट परे दे कैन नॉट माने सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट रे आउ किछि सेमाने जॉब करि परिबे. ओके, जेतेबेले सेमाने जॉइन कर जिवे तापर तांकर डिसएडवांटेज से आमे तांकर सैलरी वगैरह किछि चेंज करि परिबा नै. ओके, ऑल दिस प्रोविजंस आर और इम्यूनिटीज आर प्रोवाइडेड सो दैट दे कैन वर्क इन एन इंडिपेंडेंट मैनर. ओके, these are all your independent bodies. Next, point number 15, that is emergency provision. okay, there are 3 types of emergency. One is national emergency, another one is state emergency, and the last one is financial emergency. 3 प्रकार emergency हमें वर्तमान देखिबा. okay, emergency provisions, okay, 352 deals with the national emergency. okay, article 356 and 365 deals with the state emergency, जोटा कि हमें प्रेसिडेंशियल रूल कहउचंदी. okay, presidential or president rule. and article 360 which deals with financial emergency. जेतेबेले
देयर विल बी वार जेतेबेले वार चलथिबो कि देयर विल बी एग्रेशन ओके देयर विल बी वार देयर विल बी external aggression or there will be armed rebellion at that time our constitution has provided enough safeguard measures okay just 1 minute just 1 minute it is creating some problem let me check it